Okay, I am sure the screen is shared. नजर आ रही है आपको screen? Yes, sir. Okay. So buildings are responsible for nearly 40% of global greenhouse gas emissions. This is a very giant figure. 40%, 40%. यानी इस वक्त दुनिया में जो CO2 एमिशन है, जो कार्बन एमिट होता है, और अच्छा मैं आपको बताऊं ये कार्बन क्यों हम परेशान है, यानी कार्बन एमिट की आलूदगी पैदा की वली लका मुंगा वली खफयू पदी बानी, because this is due to the reason के जो सूरज है इसमें धमाके होते हैं. Everyone knows from the metric, from the FAC, इसमें धमाके होते हैं, and these emissions are not good for our skins. तो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे एक ओजोन लेयर यो चाणे लगोले अल्लाह ताला पदी फिजा के चाण लगोले दे, and these rays are filtered in that ozone layer. अब हुआ क्या कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई, ब्रिक किलन्स बन गए, गाड़ी आ गई, and the carbon is emitting from our vehicles and from our buildings and from the brick kilns and from the industries. So वो उस ozone layer, because the ozone is made of the O3, and when you emit the carbon to the environment, then the carbon and that O3 react to each other, which deplete the ozone. Ozone अब खराब हो गया है, ozone layer जो है वो पट गया है, to be very clear. So इसका नुकसान ये होगा जब ये सारा खराब हो जाए. मैं अक्सर स्टूडेंट को आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ, और द पख्तो मिसाल अक्सर और कुम चिकलतासु जब पतीलीना चेहरा चाहे तरमास की नुचान किए दे नुचे अगर चाणुश लिगी बिया बस चली मायो क्लास के तपोसु कुनु बिया बजी अगर पतिम पके राजी पा चावी कि मैं उम्दा का चल ले चिकले दो ओजोन ना चाणुश लिगी, so the sun rays will come directly to the earth's surface, and believe me, it will be more dangerous than this corona. Every person on this planet will be Responsible. like सब तमाम लोगों का कैंसर होगा, स्किन कैंसर इसकी वजह से. And the poor countries like the Pakistan, the Bangladesh और ये गरीब जो ममालिक हैं, they will affect more because we are not preparing it for it much. Like वो तो अभी उन्होंने वैक्सीन बना दिया है, हम रह गए हैं, and we are not able to afford because the per dose price varies from $18 to $25, which is very much, like बहुत ज़्यादा expensive. So how can we afford the vaccination or the remedies for the protection from the sun rays? And we architects are responsible. Look at this chart, look at this pie graph, look at this pie chart. You are seeing that the building portion is responsible 39%. Like look at the transportation sector, it is responsible 28%, and the industry sector is responsible for 33%. We are assuming that कारखाने ज़्यादा pollution create कई, but the facts are that buildings are creating more carbon. अपने बिल्डिंग्स में आप दूसरे दीवार पे एसीज देखें, कितने एसी सरकारी बिल्डिंग्स पे लगे होते हैं, तो वो तो अंदर को ठंडा कर रहे हैं. द इंटीरियर इज रिमेन कूल, अंदर तो उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन जो एसी का बाहर वाला यूनिट है वो तो कार्बन एमिट कर रहा है. आप किसी एसी गली में गए हैं जिसमें एसीज बहुत लगे हो, आप गर्मी महसूस करेंगे. Why? Because it is radiating the heat, it is emitting the carbon, and this heat is actually trapped inside the earth
greenhouse effect and the temperature of the earth increase due to these reasons. اکثر مونږ وایو کله چې یاره وایي پروسه کال مشران وایي چې یاره زمونږ وخت کې خو داسې ګرمي نه وه په جون جولای کې اکثر تاسو خبرې به دا اورئ وایي چې یاره پروسه کال خو دومره ګرمي نه وه دا پیره خو ډېر اور دی د دې مطلب څه دی یعنی آج coming year will be more warmer than the previous one and scientists تو یہی کہہ رہے ہیں کہ the 2050 and the 2060 or maybe inshallah اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے the 2070 and the end of this century will be more warmer than the previous one. And if the temperature hit right now the 45 degrees centigrade or 47 degrees centigrade, then maybe in a 2070, in the year 2070 जब आप next birthday मनाएंगे केक काटेंगे तो temperature जून जुलाई को यकीन करें temperature वहां पे होगा 52 डिग्री सेंटीग्रेड या 62 डिग्री सेंटीग्रेड, maybe just assume. तो क्या होगा फिर? What will happen? And this is due to the reason that we make buildings, the architect design buildings, which are responsible for the carbon emission. So why not? Why not we design projects? Why not we design buildings that are environmental friendly, that make this planet habitable? Like हमारे पास तो और ज़मीन नहीं है रहने के लिए. Somehow the Elon Musk is trying to work on the Mars to inhabit that planet, or the NASA is also working on the Mars transformation for the habitats of the human beings, but it will be a huge task to migrate from this planet. So why not to invest our energy, invest our time, invest our skills on protecting this planet rather than making another planet habitable? Like उस पे कितना खर्चा आएगा, उस पे कितना time consume होगा? So why not we design buildings that are environmental friendly, that are zero carbon, that not emit the carbon to the environment? Now, what are these strategies? हम वो कौन से strategies कर सकते हैं through which we can design zero carbon building? And perhaps this is what I love. This is what I like the most. And this is the first thing that we can do is to make our homes, to make our buildings energy free. Like we can install the solar panels on the rooftop, but solar panels is not just one solution. In many areas जहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है, like in Gwadar, like in some areas of Karachi region, like some areas of our country, we can install the wind turbines on the rooftop. Or we हम आर्किट अब बहरैन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को देखे आप, बहरैन में जो आपको राइट साइड पे बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्कुल कोने में, ये बहरैन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तस्वीर है और इस पे इन्होंने विंड टर्बाइन लगाए हैं. एक आप उसकी तस्वीर अगर गूगल पे आप बहरैन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर लिखे तो आपको एक बिल्डिंग नजर आएगा जिसके मिड टॉप पे उन्होंने विंड टर्बाइन्स लगाए हैं जो कि उस बिल्डिंग के लिए बिजली पैदा करते हैं. एंड लुक एट द सेंट्रल बिल्डिंग, दरमियानी बिल्डिंग को देखें, हाउ द आर्किटेक्ट डिजाइन द बिल्डिंग, जिसमें वॉइड्स हैं, सर्कुलर वॉइड्स हैं, एंड विंड टर्बाइन्स इज इंस्टॉल्ड in that voids to generate electricity. And look at the left side picture. On the left, you are seeing the wind turbine in a park or in a children area. Now, we architect can do this. Like if you are going to design a park, a landscape, or you are designing a building, or you are designing your next skyscraper or high-rise building in your final year project, then think on the renewable energy systems as well. Like आप अपने जो आप से लोगों ने थीसिस किए पहले पिछले साल या उससे आगे, आप उन लोगों किसी न किसी बंदे ने हाई राइज बिल्डिंग डिजाइन किया होगा, आप उसके शीट्स देके he have not provided these kind of strategies. तो आप जब फाइनल ईयर में हो और कोई हाई राइज डिजाइन कर रहा हो, so why not we provide wind turbine on the
elevation of the building just to generate the electricity for the building. This is the first strategy we can do. And Bahrain World Trade Center की अगर आप देखें तो the two towers are linked by 3 sky bridges and each holding a 225 kilowatt of the wind turbine, so totaling to 675 kilowatt of the wind power capacity. And each of these turbines are 95 feet in diameter. बहुत बड़े huge किस्म के wind turbine लगे हैं जो कि नॉर्थ तरफ पे उन्होंने लगाए हैं। ये इसी वजह से क्योंकि हवा इस तरफ से आती है, जिस तरफ से हवा आती है एलिवेशन आप उस तरफ उस एलिवेशन पे आप विंड टर्बाइन लगाएंगे ताकि वो rotate ho and it generate electricity. Now this is work by an architect. The architect had provide this idea in the Bahrain World Trade Center that why not to utilize the elevation of the building to generate electricity, like when you have solar panels on the rooftop, when you have wind turbine on the elevation of the building, then your energy, all your energy is free and your building is zero carbon. If you have solar panels, roof gardens, rainwater harvesting, the wind turbine, all these strategies are for the zero carbon building. You can now design zero carbon mosques, you can design zero carbon hospitals, libraries, and many things else. You can think outside of the box because मेरे ख्याल में बहरैन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से पहले ये तरीका किसी ने नहीं किया था कि बिल्डिंग विंड टर्बाइन उस यानी बिल्डिंग के साथ ही उन्होंने विंड टर्बाइन लगाए हैं। ये बहुत पहले हुआ है लेकिन बिल्डिंग के अंदर ही एलिवेशन पे किसी ने नहीं लगाए हैं। सो ये बहरैन का एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। you can look at it. And the next thing that you people will consider is the materials. आप अपने बिल्डिंग में कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। राइट साइड पे जो आपको इमेज नजर आ रही है, लुक एट दिस, the partition of the first floor is the bamboos. You can use the bamboos, it is durable, it is natural. And on the ground floor, look at the stone, it's also a natural material. So all this building is natural in a sense. So it is not emitting carbon, like brick इस्तेमाल इसमें नहीं हुए. So it is not emitting carbon. And instead of using the typical bricks in our building, we can also use the mud bricks, the eco bricks, the earth bricks इसको कहते हैं या mud bricks भी कहते हैं. आप अपने अगले प्रोजेक्ट में आम ब्रिक की बजाय मड ब्रिक यूज करें, मट्टी से बने हुए. ये बाकी ब्रिक्स भी मट्टी से बने होते हैं, सॉइल अर्थ, लेकिन ये फिर मट्टी काम सारा खराब कर देते हैं. तो ये वाले जो हैं ये कंपैक्टेड हैं, कंप्रेस्ड हैं मशीन में, और ये इट इज ड्राइड ऑन द सन से ये ड्राई करते हैं. एंड बिलीव मी इट इज वेरी मच पावरफुल देन द टिपिकल वन. लाइक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है, वाटर एब्जॉर्बेंट भी नहीं है. इस पे टेस्ट हुए हैं, इस्लामाबाद में इससे घर बने हैं. This is one solution, like using earth brick in your building. There are many other solutions as well. Nowadays you will see on the social media the term the prefabricated structures are the sandwich panels. आप शिपिंग कंटेनर से भी डिजाइन कर रहे हैं. यानी आपको तो टीचर ये नहीं कहता कि आपने खामखा कंक्रीट यूज कर, यानी किसने बताया कि आप फाइनल प्रोजेक्ट में जो है मस्जिद डिजाइन कर रहे हो या एयरपोर्ट डिजाइन कर रहे हो या कोई और बिल्डिंग का अस्पताल डिजाइन कर रहे हो, उसमें आप ब्रिक ही इस्तेमाल करो, आप कंक्रीट ही इस्तेमाल करो. उससे शिपिंग कंटेनर से बनाओ. यू नो अबाउट शिपिंग कंटेनर से बनाओ, सैंडविच पैनल से बनाओ. एंड
You can use the earth, you can use the mud, the soil, you can just study it in detail. The earth buildings, the contemporary earth buildings, there are many revisions in their designs. So you will love it when you see the earthen architecture, the contemporary earthen architecture. And people, the clients, the customers will like, the government organization will like the idea जब आप mud से एक चीज बनाओ, उसकी 3D पर बनाओ, आपके sheet पे वो ज्योरर देखें, if it look awesome, it will look good, yes, compared to these typical buildings. So the energy efficiency, the renewable energy, जो कि पिछले स्लाइड में था, and the material, आपने ये कंसिडर करने हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में. And then we come towards the rainwater harvesting. In your next project, I'm sure you incorporate the rainwater harvesting system. अब rainwater harvesting system क्या है? Rainwater harvesting system works by collecting the rain from roof and filtering it, and then store that water into a tank to reutilize it for the plantation, for the watering of the plants, and for the toilet flushing, for the kitchen sinks, and many things else. So you can use that rainwater जो कि छतों से नीचे आके फिर रोड पे आती हैं, और then it flow uselessly in the severages and in the canals, and then in the rivers, and then in the seas. So why not utilize that rainwater into something useful? You can do it. It's a very simple technique. अब इस घर को आप देखें, छोटा सा एक घर है, कितनी आसानी से इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक की है. ऊपर परनालू ने लैंड पाइप रोस्टर बस ऊपर टैंक्स की स्टोर की गई, and then people are using it in their routine work. So the rainwater harvesting is in another strategy, and this is what you will love when you see it. And this is called the green roof or roof gardens. ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, so the government is now not agree with you to provide you parks, ख़त्म हो रहे तकरीबन. So why not to make a park on the rooftop of my house? Chamanul is a barano jodom, the chat tapasa, and इसके अपने details हैं. When you do it in your projects, then you have also to provide the details, because you have to consider the seepage in the building and many things else, the roof loads, the soil loads on the roof. So you will discuss it to the structural engineer, but when you do it, you will probably like it, and it's amazing. Like I have seen in some countries, बहुत से लोग इस पे सब्जियां भी उगाते हैं, बहुत से लोग इस पे the sort of like barbecue भी करते हैं, many things else. So you can do it. आप कर सकते हैं ये. You can do it in your next project. Like all the 3D renderings of the of your next project will be the rooftop will be covered by either solar panels or the roof gardens. And then we come towards daylighting. Like you have to provide it windows in that direction to capture the natural light inside your building. Like आप अभी जिस कमरे में बैठे हो उसकी खिड़की को आप देखो, इसमें नेचुरल लाइट बाहर है, लेकिन आपके कमरे में नहीं आ रही, आपके ड्राइंग रूम में, आपके डाइनिंग में, आपके स्टूडियोज में नहीं आ रही. Why? Because you are deprived from the natural light, and our windows are oriented in such direction which is not necessary. Like अगर north side पे आपकी अच्छी lighting आ रही है या south, this is architecture basically to study all these things. अगर आपकी अच्छी light आ रही है north side पे, तो आप क्यों windows बड़ी 8 by 8 फुट की windows क्यों south side पे provide कर रहे हैं? So in site analysis phase, जो कि आप बेहतर जानते हैं, site आपके teachers ने आपको guide किया होगा कि
जब आप साइट्स एनालिसिस स्पेशली सोलर पाथ जब आप बना रहे हो तो आप ये सारी चीज़ इसमें कंसिडर करो कि वेयर आई हैव टू प्रोवाइड द ग्लेजिंग विंडोज। बट हमारे इलाकों में जब आप फुल ग्लेज दोगे तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इन समर। So ensure that the glass you use are having an insulation, like the dual glass, and the market is full of these kind of glazing which have high performance in the energy efficiency and the thermal insulation. So you have to consider the R value, resistivity value. When you buy a glass, when you give a full glazing, जो कि अक्सर आप अपने प्रोजेक्ट में देते हैं, फिर आपको जरूरत तंग करता है कि यार या तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपने ये स्काईलाइट पे या विंडोज पे ग्लास क्यों दी? देन द आंसर इज द आर वैल्यू। आप ये बताएंगे कि सर इस ग्लास की आर वैल्यू कम है या मैंने ये हाई परफॉर्मेंस विंडोज, इसको कहते हैं हाई परफॉर्मेंस विंडोज, लेकिन वो एक्चुअली केविटी वॉल्स का तो आपने सुना है, जिसके बीच में जगह होती है, दो दीवार होते हैं और सीट उसके अंदर फ्लो नहीं हो सकती। इस तरह दो ग्लासेस हम विंडोज के दे देते हैं, इसके अंदर खला होती है या कोई इनर्ट गैस, and what happen is that the heat not flow inside the building. So you can use the high performance glazing. You can use this term to your juror. And yes, the final is the passive ventilation. बहुत से घरों में आप जाएंगे जहाँ पे चलता पकी चानी लगोले, एसी में चानी लगोले, but the building remain the cool. हल तक हवा चलेगी. Why? Because the windows are properly organized, the windows are proper, we have cross ventilation on both sides of the building. अब इस तस्वीर में देखें, this is called the cross ventilation. आप जिस घर में बैठे हो या आप जो प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हो, ensure that you use the cross ventilation in that building. Like हम एक खिड़की तो 8 फुट बाय 8 फुट की दे देते हैं, लेकिन उसके सामने वाली दीवार पे कोई खिड़की नहीं होती. Then what is the use of that one window if there is no cross ventilation? So if you provide the cross ventilation, if you provide the windows in such direction which are good for the wind flow, जहाँ से wind अच्छी आ रही हो, and you provide windows in that direction, then believe me, you can cut down the cost of the air conditioning system in the building or the electricity cost inside the building. So we talked about the solar panels, we talked about the roof gardens, we talked about the zero carbon building definition, and then we come towards the rainwater harvesting, and the last one is the passive ventilation. And these all are the strategies for the building to work. And I think the architect can do it. The architect can do it, not a civil engineer, not a contractor, not a developer, not a medical doctor, not a lawyer, but we architects are basically responsible for providing the strategies for the zero carbon strategies, and we design such buildings which contribute to the environment positively and not negatively. आप जो बिल्डिंग अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं उसमें ईंट इस्तेमाल हुई है, उसमें सीमेंट इस्तेमाल हुआ है, उसमें कंक्रीट इस्तेमाल, these are not very good materials for the environment, because ये जिस तरह तैयार होते हैं, आपने स्टील इंडस्ट्री देखी है, एक स्टील जब बनता है ये सरिया जिसे कहते हैं, आप एफ स्टील चले जाएं, आपका शायद इंडस्ट्री टूर हो एक सेमेस्टर में, आप अगर चले जाएं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखें हतार वगैरह में, तो अगला ने ऊर बली कहना ऊर किसा या कोयला या गैस हुई नागसोरा कार्बन एमिट कीगी दा सरयम ना दखा दा खस्ती चिकम बे बटू की जुड़ी की दाम ने दिखे द दे पजेबानी. यू आर्किटेक्ट हैव टू प्रोवाइड सॉल्यूशन, यू आर रिस्पांसिबल, बिलीव मी, एंड यू पीपल कैन डू इट. अगर आप एक बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट टू डिजाइन इट्स मटेरियल एज वेल. ये नहीं है कि बस आप ऑटोकैड में ऑफसेट्स लें, ट्रिम करें उसको या कॉपी करें किसी स्टाइल को, एंड यू डिजाइन अ हॉस्पिटल और बिल्डिंग. दैट हॉस्पिटल and that mosque and that house, that will be a culprit for the environment, and we have to make this planet Earth habitable. Thank you very much.
Thank you for your lecture. वेलकम। अस्सलाम वालेकुम तारिक सर। वालेकुम सलाम। जी सर। अच्छा, तो बस बहुत अच्छा हुआ लेक्चर।